Hello and namaste and welcome to this exciting episode of Sattology Debunking Mythology. Sattology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आज हमारे पास बड़ा भयंकर पैनल है एज यूजुअल द 5 इंडियन अमेरिकन्स. नाम बोलना जरूरी है क्योंकि 5 नाम के शोज बहुत जगह चलते हैं, सो इसलिए आई हैव टू टेल द नेम वेरी क्लियरली. तो जो क्या पश्चिमी देश भारत को टारगेट कर रहे हैं या भारत इज ऑन टारगेट, तो टू अचीव इट्स ग्रेटनेस ऐसा बोल सकते हैं. दोनों साइड से हो सकता है. और तो मैं विभूति जी से सबसे पहले पूछूंगा क्योंकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में. मैं पहले ज्यादा था लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत विड्रॉ किया है मैंने. विभूति जी, ये जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस जो अमेरिकन लीडरशिप है भारत को फांसने की तैयारी में, फंसाने की तैयारी में. और मेरे को इलेक्शन देखे तो लगता नहीं है. पहले तो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन ऑन द फैबुलस विन of BJP and Narendra Modi ji. Same time, we have a lot more to do in Telangana and other states which are suffering because of communal politics. What do you have to say, sir? पहले तो आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस शो एंड हैविंग अस हियर. तो चूंकि आप फेमस 5 लगा दिया है यहाँ पे, तो आई कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ बीइंग युधिष्ठिर ऑफ द ग्रुप. The best king ever you describe him as. So exactly. Self-appointed युधिष्ठिर बन गया हूँ मैं आपको. हम आपको ताज पहना देते हैं, अभी ताज पहना देते हैं. The king of the 5. और ये कहते हैं नहीं कि भारत में जो विजय हुई है छत्तीसगढ़ का खास करके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में फ्रॉम 1 सीट to 7 or 9 जो भी फाइनल हो, ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है. And that is saying very correctly, Bharat is on target. The people of India are on target. आप जो कह रहे थे कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो है भारत को करने की, वो मुझे श्रीदेवी का गाना याद आ गया. माय फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी जी का गाना था ना, तुम्हारे हाथ ना आएगी ये लड़की वाला गाना था ना. तो भारत को अप्लाई करना चाहिए, कह देना चाहिए अमेरिका को तुम्हारे हाथ ना आएगा ये कंट्री. यू नो, इस तरह से हमें कहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही अजीब से देश हैं जिसको कि आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे देश नहीं है, भारत वैसा देश नहीं है जो कि आप अपनी लाठी चला के काम करा लें. ब्रिटिश ने किया था, मुगलों ने किया था, लेकिन फिर भी इतिहास को तोड़ने के कारण, इतिहास के झूठ बोलने के कारण हमें हमारी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा नहीं की गई थी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस पॉलिटिशियंस टू नो कि अगर आज की तारीख में अगर पन्नुन के सहारे वो भारत को अटैक करना चाहते हैं, इट इज अ ट्रैजिक थिंग. इट्स अ वेरी ट्रैजिक थिंग. एंड आई थिंक टू पैराफ्रेज मिस्टर एलॉन मस्क, इंडिया following its muscular foreign policy can tell America, GFY, you have to choose, as Bush said, between me and Pannu. As simple as that. But in reality, एक और बात भी होती है कि there are so many things that happen on the peripheral that are very important. India उनके चंगुल में नहीं है. India would have had no problem if it was a compliant prime minister like Rahul Gandhi or Manmohan Singh or Congress party, जिसको कि ये मैनेज करते रहते. मोदी इनके हाथ आने वाला नहीं है. मोदी जी ने प्रूव कर दिया है कि वो in addition to being incorruptible, he is also not going to come under their thumb just because you want him to. He will do what is right. He is choosing the dharmic pravritti. कहाँ तक सफलता मिलती है उन्हें, so far he has been successful. तो जैसे उन्होंने कहा कि आज ये सबका साथ सबका विश्वास वाली बात थी, तो मैंने उस पर ट्वीट किया था मोदी जी को कि हार्दिक अभिनंदन, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनके वोट का आदर और सत्कार दोनों ही करिए. It's very important to know that, very important to figure that out. And US knows that we have to deal with Modi to the extent that we can hurt him to the damage. You and I both know, the whole world knows how US plays its regime change game, how the US does things to manage narratives. So Blinken will tell Israel to draw a red line for
its war on against Hamas, but they will not draw a red line for Hamas to do or not to do something. This is what is a problem with the US foreign policy right now. When you apply same standard differently with your allies. See, this is very important to figure out. That's why US becomes an unreliable friend. As much as it may want to be a good friend, you become an unreliable friend because you end up hurting your own democratic countries. So when a democracy like America begins to fool with democracy like India because of Ilhan Omar and Tlaib and factions like that, then there is a problem that US needs to fix. That will be my opening statement on that. विभूति जी, डेमोक्रेसी जो था ना, क्रिश्चियंस गवर्नमेंट्स को बिठाने के लिए और क्रिश्चियन नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया था ताकि यूरोपियन सेटलर्स कंट्रोल द न्यू कंट्री विच दे फाउंड आउट। और अभी क्या हो गया है कि वो इनका पेरेंट कंट्री में ही डिस्ट्रॉय हो गया है डेमोक्रेसी वाला मॉडल। एंड नाउ सो अमेरिका इज ओनली रिमेनिंग द ओनली एंग्लो सैक्सन कंट्री। ये मैंने बुक में लिखा हुआ है, गोल ग्लोरियन गॉड में, बहुत पहले Yes. लिखा मैंने। तो लेकिन जो लोकतंत्र है वो अलग है। डेमोक्रेसी में सिर्फ एक फॉर द क्रिश्चियंस, बाय द क्रिश्चियंस, बाय एंड फॉर द क्रिश्चियंस, ऑफ द क्रिश्चियंस, ये मॉडल था इनका। रोमन कैथोलिक चाहे 1908 के बाद, 1908 में डेमोक्रेसी स्थापित हुआ अमेरिका में। तो लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है वो टोटली अलग है। मैं इसमें एक सवाल पूछूंगा आपसे और हाँ। मैं आपका उत्तर चाहूंगा क्योंकि आपने इसमें बहुत रिसर्च किया है कि lot of American politicians also say that we are not a democracy, we are a republic. Constitutional republic. We are a constitutional republic. Please highlight on that. What is the difference? Athenian democracy में एक वो किया था, हाँ, एक the Indian Constitution Day पे I had made a speech at the Indian Consulate, and that was like the exact topic that I had, democracy like versus a republic. Great. And Athenian, हाँ, कंटिन्यू करिए प्लीज, सॉरी। हाँ, तो sorry, actually मैंने आपको बीच में काट दिया, like I don't know, like if you wanted to continue and say something. मैं एक लाइन कंप्लीट करता हूँ। अथेनियन डेमोक्रेसी में जो एरिस्टोटल थे, उनको इतना हर्ट हुआ था उनके गुरु प्लाटो और उनके गुरु जो सोक्रेटिस, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक करके इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट। और अभी अमेरिका बोल रहा है हम डेमोक्रेसी नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। करेक्ट। और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसी डेमोक्रेसी लाते हैं द मेजोरिटी विंस। तो जब इनको कन्वीनियंट था तो डेमोक्रेसी था, और जब वो कन्वीनियंट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक हो गया। राइट। और इंडिया को तो डाल दिया उन्होंने कोई क्रेसी में डाल दिया। कौन सा क्रेसी है, ऑटोक्रेसी, पता नहीं किस में डाल दिया। सो नाउ अभी तो डिकास्टोक्रेसी है मेरे नजदीक। डिकास्टोक्रेसी इज द रूल बाय जुडिशरी। correct. Which one is that? Please tell again. Dicastocracy. D-I-K-A-S-T-O. Okay. Dicastocracy. Okay. So मैंने इस पे एक पूरा detailed article लिखा, why I consider India now as not a democracy but a dicastocracy. But in terms of democracy and republic, see, like it is said, democracy is the rule by vote of the majority, right? Like whoever has a major vote. But republic is a rule by the public itself, based on constitution and laws. So that is the major difference. So it is often said that a democracy will descend into mobocracy, the rule by the mob, if it is not a republic, and a republic will become tyrannical if it is not a democracy, right? So they both make each other whole. So republic का एक basic fundamental होता है कि it needs to have rule of law, but a democracy needs to have the rule by vote of the public itself. So republic is the rule by the people of the country, but within the context of the laws. So that is why this, parliamentary sovereignty versus judicial supremacy is such a big, talk in India, and also in the US.
But coming back to that question, let me जो आपने पूछा था आदित्य जी, एक ना मैं so let me share a story which not many people know, like आपको about मालूम है आपसे मेरे से भी ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं वो। बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। so ये इलेक्शंस की बात जो हम कर रहे थे, 2016 के अंदर एक बंदा था श्यामनाथ बघेल, वो उसके फ्रेंड्स ने कंप्लेंट फाइल की, वो लोकल पुलिस स्टेशन टोंगपाल एक जगह है वहां पर, अगेंस्ट नंदिनी सुंदर and her friends, and the complaint was that they were inciting them against the government and pushing them to join the Maoists. And वो उनके जो anarchist जो actions थे और crimes थे माओइस्ट में, वो उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। माओइस्ट आए एक रात, उसको बाहर निकाला और उसको मार दिया। बघेल की बीवी ने एक कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट नंदिनी सुंदर एंड अदर प्रोफेसर्स हु वर देयर। नंदिनी सुंदर is a Delhi University professor, by the way. And she and other professors were promoting and backing the Maoists, and like with their agenda to use the tribals against the government. और ये छत्तीसगढ़ में हो रहा था। Not many people will know that Nandini Sundar is actually wife of Siddharth Vardarajan, who's the editor of The Wire. उस समय जब ये केस आया तो एक बहुत बड़ी बैटरी, जैसे कपिल सिब्बल एंड ऑल दोस बैटरी ऑफ लॉयर्स केम एंड दे आर्ग्यूड एंड ट्राई टू डिले द केस एज मच एज पॉसिबल। 2018 में छत्तीसगढ़ की असेंबली इलेक्शंस हुई और कांग्रेस जीत गई। उसके बाद वो केस रफा दफा हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ forces that work in India and why it was so imperative for BJP to win Chhattisgarh. This is not just one election win. This is this is a fight against all that is going on against the soul of India. That is what we have to understand. So that is one thing, right? And like we all know how The Wire is backed by so many different forces. Vijay Patel on Twitter has done a very extensive work on this. He has shared how the different, industrialists, the donor organizations, as well as the intelligence organizations are working together to create this entire framework, of which The Wire and Siddharth Vardarajan, as well as professors like Nandini Sundar, are all part of the whole gang, right? And that is where the selection becomes so very important for us to understand. So that is one thing. And then the other thing is that ये जो हम जो बात कर रहे हैं कि क्या कर सकती है यूएस या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी कंट्रीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मैंने आज का ही न्यूज़लेटर इस एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे लिखा है। इट इज कॉल्ड द सेंसरशिप इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अभी नवंबर 30th को देयर वाज अ सब कमेटी, जुडिशरी कमेटी, जिसकी हेयरिंग हुई थी, जिसमें रूपा सुब्रमण्यम भी गई थी फ्रॉम फ्री प्रेस इन कनाडा, and also Michael Schellenberger was there, and this whole group which has been working on the Twitter files, the journalists, they have been like writing a lot of things. Not many people know, but I have actually completely like given all the details of all the Twitter files and their content that happened in this newsletter that I wrote today. There were 20 Twitter files that were shared with details of what went on within Twitter, along with the government and the intelligence agencies working together, and government may specifically Democratic Party, and how the Wokes were taking over everything, and not just in the US but across the world. वो एक global censorship industrial complex बना रहे थे, और उसमें स्टैनफोर्ड, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, and the Atlantic Council, like, which is one of the think tanks, they were all combined together and they had created something called an election integrity partnership.
Very nice name, but it is basically a control mechanism. So ये जो पूरा सेंसरशिप इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स था, इसकी हेयरिंग अभी हुई है नवंबर 30 को। माइकल शिलेनबर्गर और रूपा सुब्रमण्या की जो वो थी टेस्टिमनी, वो सुनने लायक है। तो मैंने वो दोनों वो वीडियोस उसमें डाले हैं, बिल्कुल सुनने लायक है वो। And you know what they share. Now there is another thing that has come out. It is called the CTIL files. CTI League was like another thing that was created. Like again, it brings US and UK military and all these contractors together to actually do the same thing, the censorship and how that entire thing works. वो files भी अब निकल के अब बाहर आ रही हैं। ये जो फाइट यहाँ चल रही है यूएस में, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की नेक्स्ट इलेक्शन में भी होने वाला है, बिकॉज all those forces which were going to impact India will be dented in some way. And so we should be looking at all this very very carefully. ये हो क्या रहा है दुनिया में। और जहां तक मोदी जी का सवाल है and how this election is being fought, it is remarkable how he manages the whole election thing and dents all these people like these forces that I talked about, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनको पुश बैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बात को समझें और अपना वोट ढंग से यूज करें। तो ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, मैंने काफी लंबी मैंने बोल दिया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि इनसाइड स्टोरी क्या चलती है, इनसाइड स्टोरी। और देश जी आपने इतना अच्छा एनालाइज किया है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैड रेड आल्सो, और you actually captured in your newsletter also, which is drishtikon.com. people can go and check it out. एक important question आता है कि जो the Democrats में एक यूनिपार्टी रूल चल रहा है अमेरिका में, यूनिपार्टी है, दोनों पार्टीज एक ही एजेंडा पे काम करती हैं। यूक्रेन वॉर में वी हैव सीन, अभी इस वॉर में हम लोगों ने देख लिया, और अभी एक और वॉर क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड द वॉर मॉन्गर्स आर बैक, जो निकी हेली एंड ऑल द ग्रुप्स आर देयर। क्या मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि चाइना के बाद इंडिया का नंबर है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का नंबर कभी आने वाला ही नहीं है, बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि अगर इंडिया को टारगेट किया तो अमेरिकन इकोनॉमी बैठ जाएगी। जैसे सिंपल सा रीजन है, अगर इंडिया अपनी ड्रग प्राइसेस को 0.01% इंक्रीज करता है, द अमेरिकन कॉस्ट ऑफ ड्रग प्राइसेस जो कि 1000% है, 1000% एडिशन दे डू ऑन एवरी सिंगल ड्रग दे बाय फ्रॉम इंडिया, मेडिसिनल ड्रग्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका जो प्राइस अमेरिका में जो इन्फ्लेशन होगा वो एटलीस्ट विल बी 5% मोर, तो वो कभी इंडिया पे टारगेट नहीं कर सकते। तो व्हाट यू सी विभूति जी, व्हाट यू सी? आपने ड्रग की बात की ना, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा उदाहरण है। एक बार मुझे थ्रोट प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने वहाँ पे जहाँ मैं होटल में ठहरा था वहाँ की फार्मेसी से हमने एजिथ्रोमाइसिन ली। ओके, तो उस एजिथ्रोमाइसिन की कीमत जो मैंने 5 स्टार होटल के फार्मेसी में रिटेल प्राइस में 110 रुपए दिए थे फॉर द फुल डोसेज ऑफ 3 और 7 डेज का जो था। यहाँ पे वही दवाई आपको यहाँ के फार्मेसी में वो $20 का मिल रहा था। That is after insurance. Non-insurance, $50. I asked that question. Now, here was a joke. The medicine that was selling in US pharmacy was nicely packaged, and then you read there, it is made in India. So, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इस बात को. This another example I'll give you, that I, as a tennis player, I had a serious problem with my knee once, and I was told to get MRI done and go through the whatever arthroscopy surgery and all. तो मैंने कहा कि यार कोई पैसे तो दे के मुझे देखता है नहीं, मैं तो रॉजर फेडरर, राफा नडाल हूं नहीं,
कोई धेला भी नहीं देता है देखने के लिए मुझे, तो मैं क्यों अपने आप नहीं, के आपने पाँव रैंप वॉक किया है, न्यूयॉर्क में रैंप वॉक किया है? वो बाद में पिक्चर हुआ है ना। मेरे पास, पिक्चर है मेरे पास। इसलिए कह रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे एमआरआई की बात की, 3 डॉक्टरों ने हमें कहा, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि मेरे एमआरआई सेंटर में जाओ, टेल माय नेम एंड दे विल गिव यू अ डिस्काउंट. The discounted price was $1,350 for my left knee MRI. Then I called up my tennis partner, who also was my personal physician. He said, go to my guy, he will give you a good rate. That guy said, नहीं, उसके पहले हमारे एक दोस्त हैं जो MRI सेंटर्स चलाते हैं, डॉक्टर आदान, अब रिटायर कर गए. उन्होंने कहा, विभूति तू तो मेरा यार है, मैं तुझे एकदम सॉलिड डिस्काउंट देता हूँ, 800 में कर देना. तो 1300, 800. Then I talked to Shyam, who was a personal physician and a tennis player. He says, go to my guy, check the rate with him. He says, I'll give you a Medicare rate of $500. So look at the difference. Now, here's the joke. When I went to India after I didn't do the MRI, had a trip to India, went to Pune. I will name the hospital, Ruby Hall Hospital, which is one of the finest in Pune. The CEO who was appointed of that place was a non-physician. And I just went to congratulate him. And I asked him, how much does the MRI cost here? He says, it's expensive. We have the same American machine T2. जो करते हैं हम, वही मशीन है हमारे पास, लेकिन महंगा है. मैंने कहा कितना है? 4,000 रुपए है. 4,000 रुपए. Can you imagine? Those days translation was $40. मैंने तो उसी वक्त अपना पाँव उठाया, पैंट फोल्ड किया, मैंने कहा कि कर दे यार, अभी कर दे यहीं पे. So this is an important story for Indian Americans living here, that how. अगर आपकी इजाजत हो मैं भी एक स्टोरी सुना दूं अपनी. सुनाई मेरे स्टोरी के बाद सुनाइए. अभी तो मैं स्टोरी की कह बात. रहा था कि this is where we have to know, because we in insurance we do not get to know what price we are paying for that, what cost effectively it is. So it is a dangerous thing. So India is a tough country for America to fool around with, just as China is. China can stall US economy by just committing one statement that I'm suspending the export of all essentials or non-essentials for 7 days. US कुड़की हो जाएगी, US की बिल्कुल हमारी हालत खराब हो जाएगी. So that's why US is trying to figure out unconstitutional way to harass India. Particularly, I'm not there to talk about China. I'm here to talk about India. So they're trying to figure out the ways to control India one way or the other, because they realize that these Indians are all kinds of people. There is a Desh, there is an Aditya, there is a Vibhuti, there is a South Indian, there is a North Indian, there is an East Indian. ये सब सारे विचित्र हैं. तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता है. इनकी एक नस नहीं है, इनके बहुत सारे नसेस हैं. So as a result of which they are finding it difficult. They have found 2 things they can hurt us. One is the North-South, another is Hindu-Muslim. These are the 2 issues they are playing with in India, and they will do so. Because I'll tell you one thing, the toolkit operators after this election, because Rahul Gandhi has won in Telangana, and his party is also in Karnataka, he is an MP from Kerala, he will, and AAP is North, केजरीवाल ने ऑलरेडी कह दिया कि इंडी अलायंस जो है, हम तो नॉर्थ के लीडर हैं, तुम साउथ के लीडर हो. दे विल ट्राई टू क्रिएट दैट नॉर्थ साउथ डायलॉग, द हिंदू मुस्लिम डायलॉग, because this will be a very important thing to take care of. And this is what is important here for all of us to figure out, that you and I and 3 of us and the multiplier effect of 3 must not allow that to happen. Whether it's our congressman or senator, हमें उनसे ये कहना है कि ये आप नहीं कर सकते हैं. You cannot weaken a democracy like India and then talk about democracy and freedom. नहीं, उनको बोलना चाहिए कि भाई अगर देसी लोग हमारे दिमाग चलाने पे आ गए ना, तो अमेरिका सिर्फ 35 करोड़ लोगों का देश है और वहां पे 145 करोड़ है. और ईरान उमर जैसे लोगों को मेरा चैलेंज है, आज लगाओ सैंक्शन यार, प्लीज लगाओ सैंक्शंस, मजा आएगा. विदेश जी, पहले तो मैं अपनी वो स्टोरी सुना दूं. मेडिसिन वाली. Today is the day of storytelling. Yes, storytelling. Yes. क्या था कि like मेरे को ना एक प्रॉब्लम है of gout, which is very strange because मैं vegetarian हूँ.
एंड तो मैं उसमें गाउट में एक मेडिसिन होती है एलोप्यूरिनॉल व्हिच इज अ मस्ट, लाइक यू कैन नॉट गो ऑन विदाउट दैट, वो हर रोज लेनी पड़ती है। एंड लाइक दैट इज सो वो मेरे को पहले कोपे दे के मेरे को मिल जाया करती थी, एंड सडनली इट वाज टेकन ऑफ द इंश्योरेंस। It started costing me $200 for just, I think it was just a month, like month worth of or less than a month actually. मैंने यहाँ से नहीं ली, मैं इंडिया से मैंने वो मेडिसिन ली। जब मैं और जा ही रहा था मैं इंडिया, वहां मैंने 200 रुपए में 6 महीने का स्टॉक लेकर मैं वापस आया। इतना ज़्यादा फर्क है। और ये जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, जो एब्सोल्युटली एसेंशियल्स होती हैं, ये उनको भी इंश्योरेंस से निकाल रहे हैं धीरे धीरे। सो दैट इज द प्रॉब्लम जो यहाँ हो रही है, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं, और व्हाई इंडिया विल बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट इन दैट सेंस, राइट। तो मैं दो मेरी ऑब्जर्वेशन है। पहली तो ये है कि अगर आपने सारे एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, वो सब अगर आपने देखे हो, तो आपको पता चलेगा कि हाउ रॉन्ग दे वर। द क्वेश्चन दैट one needs to ask is, and it is not the first time that they were wrong. They have been wrong consistently. They have been wrong with a bias and a strong bias for Congress and the opposition all the time, and consistently and shamelessly. वो रॉन्ग हुए चले जाते हैं। ये कैसे जर्नलिस्ट हैं, ये कैसे वो हैं, इलेक्शन के लाइक स्टैटिस्टिशियंस, जो इतनी स्पेक्टाकुलरली रॉन्ग होते हैं और कंसिस्टेंटली रॉन्ग होते हैं। अगर 100 चिंपैंजीज को अगर बिठा दूं ना, उनको बोलूं कि तुम वो नंबर बताओ मेरे को कि कितना मिलेगा, उनका नंबर ना वो 100 चिंपैंजी का अगर मैं एवरेज लेके चलूं, वो इंडिया के जर्नलिस्ट से कुछ खास डिफरेंट नहीं होगा। ये इतने खराब हैं। तो सो द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क इज कि ये इनहेरेंटली बेवकूफ है, या ये जानबूझ के ऐसे प्रेजुडिस करते हैं? और अगर ये जानबूझ के ऐसे प्रेजुडिस करते हैं तो क्यों करते हैं, कौन इनको कराता है? वो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है अब, राइट? बिकॉज लाइक दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 8 years, like last almost 10 years now. How could it be possible? मतलब लाइक इससे तो कोई बेवकूफ नहीं होता। पहला ये, और दूसरा ये कि जो आदित्य जी उस दिन जो हम बात कर रहे थे कि जो लाइक अभी शी जिनपिंग आया वहां सैन फ्रांसिस्को में, तो वहां सब कुछ साफ किया गया, सारे होमलेस को वहां से निकाला गया। पर एक और चीज वहां हुई थी कि वहां जितने प्रोटेस्टर्स थे अगेंस्ट शी जिनपिंग, उनको जो प्रॉक्सीज थे, जो उनके जो लोग उन्होंने भेजे हुए थे, जो स्पाइज या बाकी लोग जो हैं चाइनीज गवर्नमेंट के, उन्होंने बहुत पिटाई की। Really? Like I don't know, I think एक दो लोग मर भी गए, पता नहीं, like something, like it was really bad. So the American citizens of Chinese descent who were actually protesting against Xi Jinping were ruthlessly beaten by the agents of the Chinese government openly, and nothing happened. Nobody gave a damn. But I on did the, not know. No, Huh? nobody covered this. The free press. nobody covered this. Nobody gave a damn. But on the other hand, a guy like Panun, who has openly threatened to bomb an Air India plane, and a crime that that group, the Khalistani group, has already done once in 1985 of Kanishk bombing. So it is not like ऐसे ही उसने कुछ बात बोली है, उन्होंने किया है ये काम और करते आए हैं ये कैसे काम। वो उसको इन्होंने एज अ प्रोटेक्टिव बनाकर कहा कि अरे लाइक इंडिया ने लाइक इसको मारने की वो साजिश की है, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस एंड वी आर लाइक वी नीड टू प्रोटेक्ट। रियली? लाइक व्हाट अबाउट दोस चाइनीज अमेरिकन्स हु वर बीटन अप ब्लैक एंड ब्लू? तो वो कुछ नहीं था क्या? सो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के, एंड लाइक people should read the story of how Pakistan got the nukes
when even the State Department of Reagan, Ronald Reagan, actually went against the CIA and the their own custom agencies to give Pakistan the nukes. You should read the book called Deception by Adrian Levy. Adrian Levy, Adrian Levy. वो आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कैसे न्यूज है। जिन गवर्नमेंट्स को और जिन कंट्रीज को ये फेवर करना चाहते हैं ना, यूएस और यूएस के जो एजेंसीज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको वैसे फेवर करते हैं, उनको ऐसे फेवर करते हैं जैसे शी जिनपिंग को किया गया। इंडिया में जो ये हरकत जो कर रहे हैं, दिस होल थिंग दैट अ टेररिस्ट, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक Pakistan indicting US because US came and killed Osama bin Laden. Although India didn't, I don't think India actually did this, targeted Panun, because this whole thing is mired in a whole lot of other things. Niger or Raman, क्या था, वो रिपु दमन सिंह जो मारा गया था, रिपु दमन सिंह. This whole thing is actually inter-gang rivalry and killings that are happening backed by the ISI. So I won't be surprised if this was all backed by ISI itself, as Niger and Ripu Daman's killings were. Now, for the government to say such a thing openly, that we have been trying to do this, while trying to make India an ally and a counterweight against China, supposedly, I would say they have to be absolutely out of their mind. You cannot have India as an ally and a counterweight against China if this is the kind of things you're doing, like trying to do with India. Unless they are absolutely sure that Modi will not be there after the next elections. So दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो चाहते ही नहीं कि इंडिया को एलाय बनाए, ये सब एक हॉगवॉश है, तो इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया है, या that Modi is not, they have a foolproof plan that Modi will not be the next prime minister. Either of these things, two things have to be there for them to do what they are doing, given their entire history of how they actually align or ally with the different nations. So इस चीज को समझते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं आगे, और अगर ये इंडिया को एलाय नहीं बना रहे, अगर ये चाइना को ही सीधा डायरेक्टली एलाय बना रहे हैं, तो देन what is going on in terms of all the back and forth that is going on with China? Is that more of a just a hogwash, sort of a deception to the world? That is what we have to see, and how the Russia and China's alliance will go forward. So मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और दिखाई दे रहा है, एंड अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ये है कि ये हमें जानना पड़ेगा कि ये मोदी के खिलाफ इनके पास प्लान है क्या, right? I will make one comment here, and Aditya would like to hear from you on that subject matter as well. As a friend of mine tweeted, Bharat Jodo Yatra, Mohabbat ki Dukaan, cookery sessions, sewing sessions, Aikido sessions, speech at Oxford, paid write-ups, scripted interviews, paid freedom indexes. The list is endless. So much effort has gone on to promote the puppet or the parrot. Call it, I don't want to insult a parrot, I love parrots, but puppet, yes. जो कठपुतली बना हुआ उसको promote कर रहे हैं. Why is the West doing that? This is the question that we must ask. We must ask, and Aditya, I would like you to as at the moment I'm becoming the host here now, is to ask, to elicit your thoughts, because you are a very learned man yourself. So, iska kya prayojan hai? America is pitching its tent in Rahul's camp. That's one. And by the way, earlier I talked about North-South. There was a tweet again right now
when वो शहजाद पूनावाला का भाई कहता है, don't make it a north south Hindu Muslim thing. I did not read that, but I said to you, they will, by saying it, you don't make it, they're making it. You get the point? The other part was, देश जी आपने बोला था about CTIL की बात की थी आपने. That's a very explosive thing, as some people said that particular item, Schellenberger, I heard Rupa Murthy talk about it, the freedom. America is becoming, the Democratic Party particularly, I'm disappointed to say that, particularly is emerging as a really fascist country, a party. We are curbing our freedom of speech, you cannot question. They have adopted the communist Islamist ideology. You speak against me, you are my enemy. So CTIL ka jo tha, it's a long file. Actually, people have said that it is even more dangerous. Matt Taibbi made that statement in the hearing, that this is more dangerous than the exposures on the Twitter files. So Aditji, we are living in this country, and I'm concerned, in the name of the Republic, our rights are being taken away in the name of law. Actually, we are living in the new dictatorship in USA. ये बड़ा clear है. We are living in a dictatorship now. क्योंकि जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स है हमारे उतने ही है. We donate money to a political party, and we do not have control over who gets elected also. Correct. और जो हमारे representatives हैं, जैसे भारत में वोट का इम्पोर्टेंस ज्यादा है आज, मुझे कल का पता नहीं, आज ज्यादा है. यहाँ पे डॉलर का इम्पोर्टेंस ज्यादा है. आप तो इलेक्शन साइकिल में रह चुके हैं. द अमाउंट ऑफ मनी यू रेज डिफाइंस योर विक्ट्री इन द इलेक्शन. ये डायरेक्टली है. और बार बार टकर कार्लसन जैसे, मैं पूरा टकर कार्लसन का एंडोर्स नहीं करता हूँ, बट देयर आर मेनी थिंग्स आई डोंट डिसएग्री, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद हिम. और ये जो कंट्री है ये उसी पथ पे चल रही है जैसे यूरोपियन यूनियन चल रहा है. यूरोपियन यूनियन सुइसाइडल है. उसने बार बार अपने ही लोगों को मरवाया है, पॉपुलेशन को कम करवाई है और बाहर के लोग लेकर आया है. ये कंट्री, बिकॉज ये सेटलर का कंट्री है, ये सेटलर कंट्री है. देयर होम इज, मदरलैंड इज इन यूरोप समवेयर. तो दे आर फॉलोइंग द सेम माइंडसेट, चर्च बेस्ड पॉलिटिक्स का माइंडसेट फॉलो कर रहे हैं. नाउ एवरीबडी इज शोइंग द एलिजेंस टू ए चर्च, क्योंकि जब गरीबी बढ़ती है तो लोग भगवान की तरफ दौड़ते हैं. तो ये गरीबी बढ़ रही है यहाँ पे, वो भगवान की तरफ दौड़ रहे हैं. It is going to be a tough time for non-Abrahamic faith followers in the USA. Or majority of the USA is non-Abrahamic faith follower now, today. More and more Americans, including ex-Muslim का जो community है, the USA is a leader in the ex-Muslim movement also. यहीं से शुरू हुआ है, डैलस से शुरू हुआ है ex-Muslim का पूरा. और now gradually more and more people are turning towards Sanatan Dharma, Buddhism. और इस के चलते हुए a small minority is going to rule. कल मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था विभूति जी, ओनली 25% अमेरिकन वोट करते हैं इलेक्शन में, ओनली 25%. उसी पे पूरा इलेक्शन डिसाइड होता है. और जो बोलते हैं 85 मिलियन और 90 मिलियन, पॉसिबल ही नहीं है. 18 प्लस की कितनी पॉपुलेशन होगी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका इज एजिंग पॉपुलेशन. 18 प्लस की पॉपुलेशन कितनी होगी अमेरिका में? 45% होगी. तो 45% से 85 मिलियन वोट्स कैसे मिलेंगे लोगों को? आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग दैट. तो जो व्हाट वी से नंबर्स, तो पूरा का पूरा गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है. और उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक बड़ा स्मॉल माइनॉरिटी है जो कि अमेरिका चलाता है, बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी. और उसी को हम लोग डीप स्टेट बुलाते हैं बार बार यहाँ पे अमेरिका में. लेकिन अगर हम डीप स्टेट का नाम लें, अमेरिका, इंडिया में इतनी बात होती है डीप स्टेट की, किसी ने ये बात नहीं बोली कि कौन ये डीप स्टेट चलाता है. वो चलाता है फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस. फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एपिस्कोपल चर्च, ये चर्च, लूथरन चर्च, मॉर्मन्स, ये लोग चलाते हैं डीप स्टेट. और यहाँ के लोगों के पास पैसा है या नहीं है, लेकिन जो एलिजेंस है बाकी लोगों के इनकी ओर, तो वी आर लुकिंग एट द सेम 1492 पेपल बुल मॉडल यहाँ पे. मैन दैट्स व्हाई वी आर फेलिंग डे बाय डे. कि जिस अमेरिका में जो प्रॉस्पेरिटी तो 1945 के बाद आई है, व्हाई दे आर स्टक टू 1945. और मैं तो इतना बोलूंगा कि 1945 के बाद 1970 में अमेरिका स्टार्टेड सीइंग वेल्थ. और कल एक मूवी का भी मैं आपको कोट कर रहा था कि
हॉलीवुड मूवीज में विनर्स दिखाए जाते हैं और वास्तविक रियलिटी उसके एकदम अपोजिट है इधर. सो वी आर लुकिंग एट ए व्हेन दे टारगेट इंडिया, they are not targeting India because they want to change the government. मोदी गवर्नमेंट या जो मोदी एंटी मोदी जो फैक्शंस हैं जो भी हैं, they all will fail in a way, क्योंकि भारतीय जो वोटर है फार मोर इंटेलिजेंट है और उसको लॉन्ग टर्म अपना दिशा उसको मालूम है. एंड इफ दे आर श्योर कि वो मोदी को हटा सकते हैं, तो देन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका कोई बच्चे लोग चला रहे हैं, नौसिखिया चला रहे हैं. क्योंकि वो जो फॉरेन पॉलिसी जिस पे वो काम कर रहे हैं, ये 1945 नहीं है, 1970 भी नहीं है, 1971 भी नहीं है, ये 1980 भी नहीं है, ये 2023 है, जहाँ पे सोशल मीडिया हैज मेड ऑल द चेंजेस नाउ. और सोशल मीडिया के नरेशन में भारत, सनातन धर्म, योग, हिंदू कॉन्शियसनेस, ये सब आगे बढ़ रहा है. और इसके चलते हुए ये जो ट्रेडिशनल वोटर्स के जो कॉल्स होती है कि जो फियर साइकोसिस है, आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा. आप और मैं तो अमेरिका में रहते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कैंपेन चल रहे हैं. कैंपेन चल रहे हैं एंटी अबॉर्शन, स्टिल अ मेजर इलेक्शन रूल, अगेन चर्च पॉलिटिक्स. ये चर्च का पॉलिटिक्स है. यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सदियों से लड़ रही हैं अपने राइट्स के लिए. एंड आई वाज, मतलब सबको अगर कोई अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है, कहाँ से बच्चे लाएगा, वो क्या करेगा, वो औरत क्या करेगी. और सोसाइटी आपका अगेंस्ट वैल्यूज क्रिएट कर रहा है कि यू कैन हैव फ्री मिंगलिंग विद द मेन, फ्री मिंगलिंग विद, अभी तो प्रो जेंडर का पॉलिटिक्स लेकर आ गए हैं. सो द चर्च वर्सेस एंटी चर्च इज व्हाट पॉलिटिक्स गोइंग ऑन. और यहाँ पे लेफ्ट, जैसे वो बोलते हैं जस्टिस, मतलब प्रोग्रेसिव कॉकस तो इसी तरह का कॉकस है जहाँ पे वो एंटी क्रिश्चियन वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं. तो द टोटल रिजल्ट इज कि द अमेरिकन पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल स्लोगन और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है ही नहीं. तो दे विल हैव टू रिवर्ट बैक टू द चर्च पॉलिटिक्स. और बाकी सब अगर आप चर्च बेस्ड पॉलिटिक्स में आप घुसेंगे, देन एंड जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको कोई राइट्स नहीं है. यू कैन सी अपोजिशन टू विवेक रामास्वामी. नॉन जो भी अब्राहमिक इनके जो आइडियोलॉजी को नहीं मानता उसको कोई राइट्स नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, हम लोग सब कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को मानते हैं. फॉर अस कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन थिंग फॉर अस. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर गारंटी फॉर फ्रीडम. लेकिन उसको सुनेगा कौन सा जस्टिस सुनेगा? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू फॉलो द सेम चर्च बेस्ड पॉलिटिक्स. तो चर्च में हमारे जस्टिस के डिपार्टमेंट में हमारी कौन सुनने वाला है? एंड वी कैन सी दैट डिस्पाइट आवर अपोजिशन, still the anti-India rhetoric goes on, anti-Hindu rhetoric goes on, openly goes on. The situation that we are in today, long answer है थोड़ा सा. The situation we are in right now is that we have to somehow work on creating our own identity. और हमको अपने हिंदू कॉन्शियसनेस को ही सामने लाना पड़ेगा. बोलना पड़ेगा कि we do not deserve such second class treatment by the American state. Any politician for that matter, whether it is a left or right. और आपको रिपब्लिकन्स की बात कर दूं, मार्जरी टेलर ग्रीन बोल रही थी अभी कल ही इंटरव्यू में टेकर के साथ बोल रही थी कि शी इज टोटली सरप्राइज्ड एट हाउ जीओपी हैज कंसिस्टेंटली वर्कड. जो बोलते हैं वो करते नहीं. एट द सेम टाइम उसको जो अपोजिशन मिल रहा है वो उसको ओपनली बोलने पे मिल रहा है. सो वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर ए सिटिंग मल्टीपल टाइम्स कांग्रेस मेंबर आल्सो? So we have to think on all these lines. Sorry for the wrong answer. No. We are in a dialogue and a conversation. So because we are trying to bring out issues. So जैसे देश जी कह रहे थे पहले कि these journalists are the ones who have conveyed the wrong messaging, right? Like you were saying, the opinion polls. These are psychological games. These are the psychological operations. So that you hear a poll, very nicely say 1,000 people polled, margin of error 3 to 5%, but 1,000 people say something that becomes a polling. Think about it. You and I have never been polled. I have never been polled. Never. Right? So Never. Who are these people who are being polled? And then as a marketing guy, I did my MBA in marketing research. Your question determines the response. So how you frame the questions, that comes about in the whole process. So Desh ji, आज भी एक चर्चा हो रही थी कि there was a very famous journalist. He was saying that all these journalists must apologize to Indian people
for trying to peddle a bogus narrative on the television about the election. This is what is important. And that's where the manipulation, the psychological operation comes in. And that's where people, average people, are what you call, gullible. We like to believe, oh, इसने अमेरिका ने कहा है तो सच होगा. भाई अमेरिका में कहा किसने है? अमेरिका को किसने कह दिया कि सच बोलता है अमेरिका? So we have to become skeptical, not cynical. Trust but verify. That's very important statement made, and I think that's what is important. The church is a big business. Religion is a big business. It's very important to do that, and it is. You feel saddened considering the fact that technology is exposing so much truth. And I always say that tectonic shift brought by technology is changing this field of conversation and news. Go ahead, sir. Deshji, your thoughts. No, आपने इतना कुछ like you laid it out so well. Thank you. The thing is that I think like I am very heartened by this whole thing that Elon Musk and journalists like Matt Taibbi, Michael Schellenberger, and all these guys have been doing. And it's very heartening because, if you have the right intention and if you have the love of the freedoms, then you can bring about a change and an impact. And that is something that needs to happen in India. ये भारत में होना बहुत ज़रूरी है, because वहाँ पर जैसे आपने भी अभी बात की कि how so many journalists have gotten into so wrong in terms of election results. अब हमें जर्नलिस्ट की तरफ देखना बंद करना होगा. हमें खुद अपना एक प्लेटफॉर्म खोलना होगा सबको. फिर हम सबका क्या होगा कालिया? फिर उनका वही होगा जो बरखा दत्त का हो रहा है. हम लोगों को खिचड़ी पकानी पड़ेगी बाहर टेंट लगा के. हाँ, वैसे वो करती है और वहां पे रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी. वो बस वही काम करेगी जो कर रही है. वो अपने YouTube के नंबर फज करने की कोशिश करती रहती है और फिर रोती है जब कुछ होता नहीं है तो उससे. तो ऐसा ही होगा. वो ये सारे जो जर्नलिस्ट हैं, या तो उनकी जो फंडिंग जब बंद होगी, जैसे द वायर वगैरह की फंडिंग हो रही है बाहर से, जब ये फंडिंग इन सब की बंद होगी तब इनको समझ में आएगा कि असली जर्नलिज्म होती क्या है. पर उनकी जर्नलिज्म उस तरह से खत्म करने के बजाय ये इम्पोर्टेंट है कि हम सब अपनी आवाज उठाएं. बिकॉज जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि प्रॉब्लम ये जो इतना बोलते रहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अंडर थ्रेट इन इंडिया, ये सारे जो लेफ्टिस्ट हैं, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अंडर थ्रेट. उनकी प्रॉब्लम ये है कि अदर्स ऑल्सो हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच नाउ विच दे हैड पुट अंडर कंप्लीट रैप्स. सो उनकी दिक्कत ये नहीं है कि हम बोल नहीं पा रहे, उनकी दिक्कत ये है कि अब बाकी भी बोल पा रहे हैं. आपका आवाज जो है वो इतनी थ्रेटनिंग है उनके लिए कि उनको लगता है उनकी खुद की आवाज खत्म हो गई है. ये इंपॉर्टेंस है हर किसी की आवाज की. तो अगर आप वाकई में खुद के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ देना चाहते हैं तो खुद की आवाज दो. Please raise your voice. Please share your thoughts, your voice everywhere as much as you can. But be self-aware. Because one of the things that has like really come out after the Twitter files and the CATL files and the weaponization of the federal government जो ये hearing चल रही है, उसमें मेरे को एक ही चीज दिखाई देती है कि इस सब में जो ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनमें जब तक
लोग खुद नहीं बोलेंगे कुछ और खुद ये चीजें बाहर नहीं लाएंगे, तब तक ये जो फोर्सेस हैं ये आगे बढ़ती ही चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं कहीं पर। तो इसीलिए बस if we want to save the future of India or the democracy itself, the free world as we should define free world, not as the West and the liberal West now, or the the left liberal West actually defines it, but the way it should be defined. If we have to save that free world and free voice, then I think we need to raise our voice. Raising the voice, that's my favorite thing. I always say this. आज की तारीख में, thanks to social media, we have a voice. Think about it. Today, Rajdeep Sardesai made a stupid statement to Amit Malviya, and Amit Malviya जी ने उसकी बोलती बंद कर दी. सारी दुनिया ने देखी इस बात को. एक समय में हम इसके बारे में जान नहीं सकते थे. News used to filter and come to you. Today the news comes to you unfiltered. Unfiltered, आप कुछ भी raw news भी देख सकते हैं. So I totally agree with you, Deshji, that I have always said that we all have the ability to do something and we must do. What is it that you can do? Individually you can do. And I'll give an example. I did it. I give you an example. I decided I'm not going to consume or buy anything that is halal. Let the journey begin from point A. That's simple. Let the journey begin from point A. From then onwards, then you can create a samaj, a samuday or a sampradaya. अगर हम नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एक्शन से ही ये इंस्टीट्यूशंस बनती हैं. तो अगर आवाज नहीं उठाई, अगर हमने बाइडेन को नहीं बोला कि ये मत करो, अगर हमने ब्लिंकन को ये नहीं कहा कि you can't draw a red line for only one and let other person play with their hands tied behind their back, unless and until we don't say that your freedom of speech, your OBL was your terrorist, so you went and killed him in Pakistan, that is perfectly kosher. But if I kill my terrorist, that becomes your human right violation. You can't apply dual standards of these issues publicly, because now people, जो राजेश खन्ना का गाना था ना, पब्लिक सब जानती है, अब देखती भी है, सुनती भी है. That's what is important for it. That's all I will say, because I will urge everybody that, hey, speak, make your voices heard, create your own identity, protect your identity at all costs. Thank you. भाइयों, एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ. गीता कंपटीशन इज लाइव. आप सतोलॉजी कोर्स पे भी जाके देख सकते हैं. और एवरी ईयर वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 17 इयर्स. गीता कंपटीशन होता है सतोलॉजी से. सतोलॉजी वर्ड नया है, लेकिन हमारा गीता कंपटीशन चलता है इज ऑन. तो लोग जाके सतोलॉजी कोर्स पे देख सकते हैं, हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं. देयर वी कैन सी दैट. तो डू पार्टिसिपेट. इंडियन अमेरिकन किड्स शुड पार्टिसिपेट. Adults should also participate to read, and also there will be fabulous judges over there. Fabulous judges. हमारे 5 के लोग भी witness रहेंगे. It will be live on Sattology, so every child will get an exposure in USA. So it's the longest running Gita competition. Please do join there. I definitely want to congratulate you for this, because I'll tell you, in 1983, and I want all the listeners to pay attention to this, there was a management consultant from Southern India part who was a Harvard guy, Harvard MBA, Harvard management consultant, and he told us in Bankers Club in RBI Bangalore when I was working there, he said, Indians do not need to go to Ivy League colleges to learn the art and science of management. What they need to do is to study Mahabharata, Bhagavad Gita, and Ramayana, because life lessons are right out there. That was a very deep statement which had an impact on me, which I began to realize later. So I'm giving you my personal proof of this. Success formula is written in chapter 18. Go read it. When you are helpless, you feel desolate, you realize that nobody is with you, read Shlok 3 of chapter 2. This is where Arjun was invoked by Krishna कि आपकी नपुंसकता आपको शोभा नहीं देती है. Exactly. So point which is there,
study. One important lesson of Mahabharata and Gita, which I have learned, is that you will read the text multiple times. No person has been called right or wrong, good or bad. What is the lesson there is that everybody, the decision you make, you have to live with the consequences of that, whether you are Dronacharya, Bhishma Pitama, Karna, or whoever. If this went into choppered play, he had to bear the consequences of his action. This is what is important for all of us to remember. Thank you, Aditi ji. Badhai ho aapko. So one last point we'll take on this. See, who is trying to target Bharat? Who? में जो गाय का मांस खाता है, जो जो अधर्मी है, मतलब उनकी क्या औकात है टारगेट करने की भारत को? वी आर ए प्राउड इनहेरिटर्स. हम सभी वी आर ऑल born in India and we all accepted American citizenship for our financial purposes. Very clear, very honest in that. लेकिन अब हम लोग उसी समाज को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मच. नाउ मेरा एक इसमें प्रश्न आता है कि ये है कौन व्यक्ति? ये असुर है जिसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कहीं पर भी. मतलब अगर हम सुर असुर की बात करें गीता के 17वें अध्याय में, तो नरक के द्वार सबने खोल के रखे हुए हैं. तो अ वेरी लो क्लास पीपल, क्लास बोलना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कास्ट नहीं है, क्लास की बात हो रही है. कास्ट और क्लास में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अ पर्सन जिसका कोई धार्मिक वैल्यू नहीं है, वो भारत को एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है. और वो ऐसे गेम खेल रहा है जो जैसे अपने बाप से टक्कर ले रहे हैं कि भाई अब हमारे बाप वहां बैठे हुए हैं सबके सब. और जहां जिनको राज करना नहीं आता, दीज पीपल डोंट नो हाउ टू गवर्न. क्योंकि हर 90 साल में इकोनॉमी चौपट हो जाती है, कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, 8-8 साल में इकोनॉमी नीचे जाती है, तो मैनेज कहाँ कर सकते हैं? देन हाउ कैन वी टेक दीज पीपल सीरियसली कि बाकी चीजें भी ठीक कर सकते हैं? देश कपूर जी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है. ठीक है, मैं जैसे आप बात कर रहे थे मैं सोच भी रहा था इसके बारे में. तो एक है एक धार्मिक सिविलाइजेशन और द इंडिक सिविलाइजेशनल ईथॉस, अगर जिसको हम लेकर चलें. इसकी कुछ वैल्यूज रही हैं. धर्म की अपनी एक वैल्यू है और उसका एक वे है कि कैसे इंसान खुद का अपना जीवन व्यापन कर सकता है. वो जीवन व्यापन की जो पद्धति है, जो धार्मिक पद्धति है, वो भारत में मानी गई थी और वही भारत को जोड़ती थी. नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट वो जोड़ती थी. और वो मानी जाती थी कि इससे सिर्फ शांति ही नहीं बसती उस जगह पे, उससे एक कॉन्शियसनेस भी इंक्रीज होती है, उससे आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी होता है. जब बाहर से अटैक होने शुरू हुए, जैसे ग्रीक अटैक हुआ जब अलेक्जेंडर का और बाकी, तो उनको मलेच्छ कहा गया था. मेरी नज़र में मलेच्छ जो शब्द है उसका मतलब ही ये था जो इंडियन सिविलाइजेशन को ना समझते हैं, ना मानते हैं और ना रहने देते हैं. 2 शब्द है, यवन और मलिच्छ. हाँ. 2 शब्द अलग. मलिच्छ मतलब गंदा और यवन मतलब जो वेदों के विपरीत काम करे. हाँ, पर ये जो बाहर से आए मलेच्छ, वो पहले उनको भी यूज किया गया और बाद में जब मुसलमान आए तब भी, जब इन्वेडर्स जो आए. और ये जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ वन who we are and who are the outsiders, basically those outsiders. और ये सिर्फ हम नॉर्मल जगह लोगों ने यूज किया. इवन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी बेंती चौपाई में भी जो इन्वेडर्स हैं और जो उस समय के जो इस्लामिक जो रूलर्स थे उनको मलेच्छ बोला है उन्होंने. तो ये बड़ी देर तक ये the Indian civilization or dharmic civilizational people and the outsiders, this distinction was very, very clear in people's mind. And that, like, what is right and what is not right, जो धार्मिक है जो अधार्मिक है, जो मलेच्छ जैसे आप कह रहे हो वो डर्टी, दैट इज अधार्मिक. ये डिस्टिंक्शन जानना बहुत जरूरी है, राइट? मैं एक साई दीपक
की वो उनकी एक वो था वीडियो, वो देख रहा था। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली बोला, उन्होंने बोला कि हाउ इज इट दैट all these groups, whether it's the Abrahamic groups, are so united, whereas the Hindus are not. He said the reason why they are united is not only do they define who they are, but they also define very clearly who a non-Christian and a non-Muslim is. He says, unless and until you define that, like you are saying everybody is a Hindu, everybody is this, everybody is that, तो फिर तुम अपनी बाउंड्रीज बनाओगे कैसे बनाओगे वो लिमिट के जहां तुम्हें मारा जाए और तुम उसको रोको। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्टिंक्शन हमने पहले बनाई थी जब ये यवनों की और मलेच्छों की हम जब बात करते थे, ये डिस्टिंक्शन हमने बनाई थी। वो डिस्टिंक्शन चली गई पता नहीं कहां पर, क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि सब कुछ सही है, यवन भी सही है, यवन भी हम हैं, मलेच्छ भी हम हैं, हम हिंदू भी हैं, हम सब कुछ है। वो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कौन है वो लोग जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं? वही जो हमेशा से टारगेट करते आए हैं, जिनको कंट्रोल चाहिए, जिनको पावर चाहिए, जिनको ग्रीड चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो उनके कहते हैं ना, swing the spanner in the works. That's what the Indian civilizational ethos can do. And they can see it here, right? I think Balaji जो है, like I really follow Balaji a lot because he's one of the foremost thinkers. He's like one of the startup guys, tech startup guys, and a great thinker. And he was having a podcast with Ranveer Alabadi. So he was saying very nicely, he said, the problem that US has with the Indians versus like what the Russians or Chinese is that the Indians are not just argumentative, but they can argue in English and argue better than other people. So when they say something about India, the Indians can come out with not just one, but 5 different arguments against them. Whether it is Arnav or it's Palki Sharma, people are now getting up and pushing back on this. And that is the difference that we have. So we should use that difference of a thinking mind, and that is what they are most afraid of. Not only do we have a very strong civilizational ethos, but we have the wherewithal and the intelligence and the language, the command of the language to actually push back and become a force. So my last thought on this would be, yes, there is Palki Sharma, there is who else? Who was the second name they mentioned? Arnab Goswami, whatever. But there is Desh Kapoor, there is Aditya Satsangi, there is Vibhuti Jha. So there are people who are willing to talk. I mean, we may not be as popular as those people are because they have a bigger platform to speak. But if you like what we do, then do like and support us. That's what is important. You don't have to agree with everything that we say or do, but elements that we agree with. I mean, I'm a firm believer that every individual, every Indian, every Bharatiya, every Hindu must protect and defend his or her identity. That's what is important. Our identity can't be ruined. And Desh ji, वो कौन लोग हैं जो हम पे प्रहार करते हैं? वो लोग हैं जो हमसे भय खाते हैं। यार, इसकी philosophy ऐसी है कि you can't deny that philosophy. That's what is important. You cannot negate our thoughts, the Vedic thoughts, and therefore they are concerned because our thoughts are based on nature, inquiry, learning, knowledge, whereas their thought is based on fear and ignorance. Gabbar Singh आएगा, Gabbar Singh नहीं आता, Gabbar Singh तो अपना दोस्त है. That's what I'm trying to say to you. Thank you very much. I will not say anything more. मैं एक पॉइंट ले लूंगा, फिर देश कपूर जी आप कंटिन्यू करें। एक
म्लेच्छ मतलब मैं तो बहुत स्टडी करके आपको बता रहा हूँ सभी संप्रदायों को। म्लेच्छ मतलब जो स्नान समय पे ना ले, थोड़ा गंदा रहे, मतलब वेदों में विश्वास होता है लेकिन वो ही इज नॉट क्लीन। और असुर जो होता है इट्स ए वेरी ब्रॉड कैटेगरी, जो वेदों के विरुद्ध काम करे उसको असुर बोलते हैं। और राक्षस इज ए सेपरेट स्पीशीज ऑल टुगेदर। जैसे घटोत्कच राक्षस है, एंड समटाइम्स राक्षस आर गुड, समटाइम्स दे आर बैड ऑल्सो। जैसे प्रहलाद महाराज भी राक्षस है लेकिन वो भक्त भी है। घटोत्कच भी राक्षस है लेकिन वो भक्त है। सो राक्षस कैन बी गुड बैड बोथ। इनफैक्ट सूर्य के भगवान के रथ के आगे राक्षस चलते हैं, बहुत सारे राक्षस हैं उनके साथ। भगवान राम की सेवा करने के लिए बहुत सारे राक्षस सामने आए थे, इंक्लूडिंग विभीषण। यू कैन नोट दैट। और तो ये राक्षस कैन बी गुड बैड बोथ साइड्स। और जो आपने यवन की बात करी, यवन मतलब होता है जो वेदों मतलब असुर का ये कैटेगरी आता है लेकिन एक स्पेशल रीजन से आता है। जैसे टर्की के लोग हैं, टर्की की साइड के हो गए, जो पूरी यूरोपियन नस्ल है वो यवन की रेस में आ जाती है। और ये लोग वेदों के विरुद्ध ही फिलॉसफी रखते हैं, वेदों के विरुद्ध ही काम करते हैं। ये 3 ब्रॉड डिफरेंस है। लेकिन असुर इज अ ब्रॉड कैटेगरी। सुर और असुर जो वेदों के साथ है, सुर है, बाकी बेसुर है, मतलब असुर है। यमन तो नहीं था ना, यमन 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 तो नहीं बन गया। यूनान, यमन, ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं सब इधर से। Desh Kapoor, you're saying something. Please. नहीं, like I think I had almost finished. मैं see the thing is कि ये राक्षस असुर जो है ये हमारे वेदों से और पुराणों से और ये सब पुराणों से आए हैं। पर इनको ना अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर ढालना है तो मैंने तभी लाइक मलेज का यूज किया था, जो काफी कंटेम्प्रेरी टाइम तक यूज होता रहा है हमारे आज भी यूज होता है। हमारे डिस्कोर्स में कंटेम्प्रेरी यूज होता रहा है टू डिस्कस बिटवीन हु द इंडियंस वर और द भारतीय वर एंड हु द नॉन भारतीय वर। तो धार्मिक और अधार्मिक का जो डिफरेंस है उसको दर्शाने के लिए ये बड़ी बहुत रिसेंटली तक यूज होता रहा है। और ये मेरा मतलब ये है कि हमें एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी है, और वो डिस्टिंक्शन जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनके खिलाफ हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे खिलाफ है। करेक्ट, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और बहुत अच्छा इसमें ये भी है कि इट हेल्प्स अस टू प्रिपेयर। शत्रु बहुत आएगा फिर कि नाउ यू नो कि दीज आर अपोजिट। और सबसे आश्चर्य की बात ये है, हम इन लोगों को सुनते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं, इनकी बुक्स कोट करते हैं। हमको कोट करना चाहिए देश कपूर जी की बुक्स, विभूति झा जी की बातें, और हम लोग अपने शास्त्रों को कोट करना चाहिए। जबकि किसी जैसे अपनी पुस्तकों में किसी भी वेस्टर्न ऑथर को कोट नहीं करता हूँ क्योंकि दे आर इररिलेवेंट फॉर मी, बिकॉज वो जितना भी अच्छा लिख ले, कितना भी अच्छा एनालिसिस कर ले, यू नो, बट स्टिल देयर इज एट द एंड ऑफ द डे जिसने गौ का मांस खाया है उसका बातें मैं सुनूं कैसे, यू नो, लाइक व्हाट इज द थिंग इन देयर। तो आनंद जी एक ऐड करूंगा यहाँ पे, उनकी बात क्यों सुनूं, जब उनकी भाषा में त थ ध वो प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते हैं तो क्या बात करेंगे उनसे हम भाई। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। एनीवे, शायद इंग्लिश के लिए भी हम देवनागरी यूज करिए, मेरा सजेशन होगा इन लोगों को कि देवनागरी को यूज करिए इंग्लिश लिखने के लिए। उस आइडेंटिटी की बात है, ये बड़ा पर्सनल सा है, एंड आई वांट टू इम्प्लोर अपॉन एवरी इंडियन, थिंक अबाउट इट, आवर नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा नाम जैसे विभूति है, अंग्रेजी में त है नहीं, तो बहुत सारे हमारे अमेरिकन कॉलीग सब मुझे विभूति कहते थे, विभूताई कहते थे, तो मैंने सबों को त सिखाया। मैंने कहा कि मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। अगर श्वार्ज़नेगर एंड श्वार्ज़कॉफ ने अपना नाम नहीं बदला और हम उनके नाम का प्रयोग, उच्चारण सही तरीके से करने का प्रयास करते हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उनको सिखाऊं। आदित्य इज आदित्य, नॉट आदित्य। That's right. We have to make an effort to teach them our phonetics, our alphabets, so that our identity is protected. And when I tell them that my name means the holiest of the holy, they get it. Thank you. That's all. Aditji,
मजा आया। Thank थैंक यू। thank you all for joining the show and also keep joining. ऐसा मत सोचिए कि इंडियन अमेरिकन हैं तो हम लोग अमेरिकन हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पर भी सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी लिव इन अमेरिका वी हैव लॉस्ट टच। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अमेरिका में 1000 से ज्यादा मंदिर हैं, और अभी जो न्यू जर्सी में मंदिर खुला है स्वामी नारायण का, वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है आफ्टर मायंस। राइट। आफ्टर मायंस, युकाटान के मंदिर के बाद चिचेन इट्जा जिसको नाम है, उसके बाद सबसे बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है, एंड दैट हैज शॉक्ड द एंटायर यूएसए टुडे। राइट। एवरी सिंगल चर्च, एवरी सिंगल मॉस्क, सबको बीट किया है उस मंदिर ने। और ये तो शुरुआत है, इसके बाद हम लोग को, मैं तो चाहता हूँ कि नेटिव अमेरिकन शुड वर्क विद अस। आई इनवाइट नेटिव अमेरिकन टू वर्क विद अस टू revitalize the Native American society through Indic values, क्योंकि उनका their religion is same as ours, similar है, हमारा पूरा सनातन धर्म ही है। And it will be an effort of Sattology this year 2024 to integrate Native Americans and our Hindu Americans together for a bright future. They are 7 million, we are 4 million, we are 11 million now, and plus many yogis, 30 million. We are looking at a majority 65 million, a very solid vote bank, which will make a change in a positive way for a better USA. तो आप सब हमारे से जुड़िए, हम सबके साथ रहिए और हम लोगों को हेल्प भी करिए। नमस्ते एंड थैंक यू। नमस्ते।